Okay, so we'll be discussing with the economic survey of 24-25 and budget of 25 and 26. So first of all, the purpose of referring to the budget, objective purpose के लिए भी है as well as for the short question, not for answering any long question. Descriptive answer के लिए budget का content ज़्यादा relevant नहीं होता. It is not that they will be asking a descriptive, let us say 15 mark a question or 20 mark a question from the budget, but you can get long weightage question from the economic survey part. So survey you have to study from both the purpose, that is with the short term, that is short question, as well as for the long question. And the content of economic survey will be basically used in your Indian economy paper, and you can use the content of economic survey at multiple places, we can say. For many questions you can use the language of the survey in order to improve the presentation, the introductory part of the answer or the conclusive part of the answer, in addition to the objective information. So objective information will be basically covered in the economic survey. That means you have to update the Indian economy notes as well. Like for example, the budget has revised the MSME criteria. तो ऑलरेडी जो आपने कंटेंट कर रखा है उसके अंदर वो क्राइटेरिया मेंशन है, बट यू हैव टू अपडेट इट. तो अपडेट करने का काम भी आपको इंडियन इकोनॉमी के अंदर जो नोट्स आपने ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखा है उसको आपको अपडेट भी करना है. और हर जगह आपने जहाँ मार्क कर रखा था, टेबल ड्रॉ कर रखा है, यू हैव लेफ्ट वन कॉलम ब्लैंक फॉर द न्यू डेटा. So for that new data, obviously you have to refer to the economic survey as well as the economic union budget. Content obviously in the budget will be less as compared to the survey. Survey has in total 13 chapters. 13 chapters are covering for the state of the economy to begin with. Then public finance के लिए अलग chapter हो जाएगा, for agriculture, for industry, for public finance, for monetary management, for external sector, for labor laws. So 13 chapters are obviously, so survey is obviously a voluminous document as compared to the union budget. Union budget will be basically limited because they are basically announcements, basically we can say. जो estimated revenue और expenditure का announcement होगा plus some policy announcement as well. But economic survey is basically evaluation of how economy has done or performed in the last few years. तो सर्वे आपको डिफरेंट एंगल से पढ़ना है और यूनियन बजट विल बी स्टडीड फ्रॉम डिफरेंट एंगल. सो विल प्रेफरेबली विल स्टार्ट विद द यूनियन बजट फर्स्ट बिकॉज इसके अंदर कंटेंट कम हो, वी कैन कंप्लीट इन दिस लेक्चर, एंड देन वी विल टेक अप डिफरेंट चैप्टर्स ऑफ इकोनॉमिक सर्वे एंड डिफरेंट सेशन. सो आई थिंक 4 to 5 lecture will be good enough to cover the entire economic survey as well as the union budget. So we can begin with the union budget part first. ठीक है, बजट वाले पार्ट से पहले स्टार्ट करेंगे. So although many informations are available, but still जिससे आप जब तक आप उसे नोटबुक में, अपने नोटबुक में नहीं लिखते तब तक वो याद नहीं रहता. So it will be better if you write all the information in your own notebook. ठीक है. So first start with the union budget of 24, 20, 25, 26 in fact. ठीक है, फर्स्ट थिंग अबाउट बजट, टेक्निकली इट इज कॉल्ड एज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर आर्टिकल, वो इकोनॉमिक्स में नहीं आता बट इंफॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट है. अंडर आर्टिकल 112. ठीक है, तो वो इंफॉर्मेशन बता रखिए. तो बिकॉज कोई भी ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन अब होता है, तो जनरली यूपीएससी के एग्जाम में अगर ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन के लिए आप प्रिपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली 4 इन्फॉर्मेशंस आर गिवन. वन विल बी द फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, वन विल बी द कंसेप्चुअल इन्फॉर्मेशन, वन विल बी कुड बी द अप्लाइड, और उसके बाद फिर ऑप्शन स्टार्ट होगा कि वेदर फर्स्ट इज करेक्ट और फर्स्ट एंड सेकंड बोथ इज करेक्ट एंड देन ऑल 3 आर करेक्ट. तो you must have the information, the factual information, the applied information and the basic part as well. So first prepare the framework in which we have to take this union budget. So under article 112 it is provision, annual financial statement. The main idea, that means in which we will be studying this entire budget will be
that the journey of development will be empowered by the engines of development. And what are the different engines of development? The engines of development as identified by the Union Budget 25-26 include, you can mention the areas. So you can write down the first line as the development journey empowered by engines of development include. Journey of development empowered by engines of development include. One will be agriculture, so we will have informations about the agriculture. We will take up separately this. Second is a MSME. Third will be investment. And the fourth part will be export. So the future journey or development will be through agricultural growth, then MSME sector growth, investment, and through exports. So 4 areas are identified by the budget: agriculture, MSME, investment, and exports. Clear? So we have to identify what are the various measures taken within agriculture. So we will explain agriculture in detail, then MSME in detail, after that investment in, and then the export part. Below that, next paragraph. In this development journey, reforms will act. In this development journey, reforms will act as fuel. After comma, inclusivity is guiding spirit. Inclusivity is the guiding spirit. And Viksit Bharat is the destination. That means basically the approach or the main idea of this budget is basically that the journey or development will be done through agriculture, MSME, investment, and exports. And in that journey, reform will be acting as the fuels, and in any measures we will be basically focusing the inclusiveness and to achieve the aim of Viksit Bharat. So that with that idea basically we are approaching this. Next paragraph. Aspirations of Viksit Bharat include number 1, accelerate growth. Second, secure inclusive development. Third, enhance spending of India's rising middle class.
enhance spending power of India's rising middle class. In that context, you will see the tax changes to improve the spending power of the rising middle class. Next, promote private sector investment. Promote private sector investment. And fifth, uplift household sentiment. Uplifts household sentiment. Now, what are the different development measures? Development measures focusing on गरीब, यूथ, अन्नदाता एंड नारी. His focus will be basically on the youth, on poverty and the farmers and women. ठीक है, बट जनरली इकोनॉमी सर्विस में 5 मार्क का जो क्वेश्चन होते हैं उसमें फॉर्म का स्टेटमेंट डायरेक्टली गिवन होगा कि व्हाट आर द डिफरेंट डेवलपमेंट मेजर्स रिलेटेड टू दिस. यू हैव टू जस्ट मेंशन द पॉइंट्स बिकॉज 1 पेज के अंदर वो कंटेंट बेसिकली आपको लिखना है. जस्ट वो जो डेवलपमेंट मेजर्स लिए जा रहे हैं रिलेटेड टू दिस यू हैव टू मार्क. बट रिमेंबर व्हेनेवर यू आर राइटिंग दिस विद इन दैट देयर आर 4 part you have written up front. One will be agriculture, second will be MSME, third will be investment, and fourth will be the exports. So we have to mention in that part. But these are the development measures taken in the field of agriculture for MSME promotion, for the investment, and then for the export promotion. So first take up the first area, which is agriculture. Agriculture. Promoting agriculture growth. Promoting agriculture growth. Promoting agriculture growth and building rural prosperity. Promoting agriculture growth and building rural prosperity through first PM धन धान्य कृषि योजना. PM धन धान्य कृषि योजना. ठीक है, प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना फॉर डेवलपिंग एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम. For developing agriculture district program. Agriculture district program. It aims to, just briefly explain करते जाना. It aims to, जहाँ वन लाइन इंफॉर्मेशन है. It aims to cover 100 district. It aims to cover 100 district and likely to help 1.7 crore farmers.
1.7 crore farmers. Second, enhanced credit through Kisan Credit Card, KCC. Enhanced credit through Kisan Credit Card. Enhanced credit through Kisan Credit Card. Which aims to facilitate short-term loans for 7.7 crore farmers, fishermen and dairy farmers with enhanced loan of 5 lakh. सब्जेक्टिव अगर आप आंसर लिख रहे हैं तो वो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ना भी लिखे चलता है, बट यू जस्ट मेंशन दैट enhanced credit through KCC विदाउट मेंशनिंग दैट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन. बट अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है लाइक प्रीलिम्स वगैरह के लिए अप्लाई करें तो उसमें फिर वो ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन मैटर कर जाता है. उस प्रोग्राम से रिलेटेड आपको 4 इन्फॉर्मेशन दे देंगे. तो फॉर दैट पर्पस, अदरवाइज अगर आप डिस्क्रिप्टिव आंसर लिख रहे हैं तो जो बोल्ड पॉइंट्स मार्क कर रहे हैं बेसिकली सिर्फ अगर वहां भी यूज कर लेते हैं. प्लस इवन यू आर राइटिंग द क्वेश्चन फॉर एनी एग्रीकल्चरल सेक्टर क्वेश्चन जहाँ पे आपसे सजेशन के फॉर्मेट में पूछा गया या रिसेंट मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इंप्रूव द एग्रीकल्चर सेक्टर, तो इन दैट ऑल्सो यू कैन मेंशन और एड ऑन दैट एज अनाउंस इन द रिसेंट बजट these programs are there, so you have to include it in your answer for a descriptive paper. Third, mission for cotton productivity. Mission for cotton productivity. Just underline that and below that. 5-year mission to facilitate improvements in 5-year mission to facilitate improvements in productivity and sustainability of cotton farming. Productivity and sustainability of cotton farming. Fourth, national mission on high yielding seeds. National mission on high yielding, that is high productivity, high yielding seeds. Fifth, Makhana board in Bihar. Makhana board in Bihar to be set up to improve production, improve production, processing, value addition, and marketing. Next, Atmanirbharta impulses. Atmanirbharta impulses.
To achieve this, government launch a 6-year mission. Government launch a 6-year mission. 6-year mission with a special focus on Tur, Urad and Masoor. Pulses. Emphasizing development and commercial availability of climate resilient seeds. After comma, enhancing protein content and increasing productivity. So related to the agricultural growth, the first engine of the development. Related to the agriculture, the few announcements in the union budget. ठीक है, इसको आपको सप्लीमेंट फर्दर करेंगे जब आप इकोनॉमिक सर्वे वाला एग्रीकल्चर का चैप्टर पढ़ते हैं. तो एग्रीकल्चर के चैप्टर में फिर एग्रीकल्चर ग्रोथ के बारे में, एग्रीकल्चर के और जो भी डायमेंशन है वो डायमेंशन फर्दर डिटेल में एक्सप्लेन होगा. द लिमिटेड अनाउंसमेंट इन द बजट रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर सेक्टर. सो again remember that we are discussing basically these 4 areas. One will be basically the agriculture, related to that. Next will be the MSME, and in all those area after this completing these 4 we have to explain basically what are the reforms. So reforms in the area of financial sector, reforms in the area of fiscal sector, reforms in the area of regulatory. तो primarily fiscal sector, financial sector और रेगुलेटरी में, और फाइनेंस फिस्कल सेक्टर के अंदर बेसिकली टैक्स रिफॉर्म, डायरेक्ट टैक्स एज वेल एज द इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म. सेकंड पार्ट विल बी द एमएसएमई. ठीक है, पहले वो क्राइटेरिया जो रिवाइज्ड है वो लिख लीजिए. ठीक है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट चेंज इज बेसिकली दैट रिवाइज क्राइटेरिया, रिवीजन इन द क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया. सो व्हाट वर द क्लासिफिकेशन प्रायर टू दिस बजट? वो ऑलरेडी पहले भी रिवाइज हुआ था कोविड के पीरियड में, तो एक रिवीजन आपने पहले भी नोटबुक में लिख रखा है, ये फर्दर रिवीजन हो गया. ठीक है, तो अब जो फर्स्ट वाला है उसको अगर आप इग्नोर कर दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. मतलब ऑलरेडी जो आपके नोटबुक में लिखा होगा एमएसएमई में, उसमें कोविड से पहले वाले पीरियड का क्राइटेरिया था, इन्वेस्टमेंट वाला और फिर टर्नओवर वाला, वो रिवीजन वहाँ हो गया और ये फर्दर रिवीजन है. ठीक है, तो अब जो फर्स्ट है उसको अगर आप इग्नोर कर दो, यू कैन तो राइट डाउन द रिवाइज क्राइटेरिया फर्स्ट. Can make in this form. Revised criteria, one will be for micro enterprise, then small enterprise and medium. Micro, small, medium. Make write it here, investment, that is investment in the plant and machinery. इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे आप दो पार्ट में इसको डिवाइड कर लो, एक ओल्ड आ जाएगा और एक रिवाइज आ जाएगा. ठीक है, ओल्ड एंड रिवाइज फॉर द इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया. एंड द सेकंड क्राइटेरिया इज टर्नओवर.
For turnover also divided into two parts. One is the current, second is the revised. ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन यू आर राइटिंग बेसिकली दे आर इन करोड़. सो 1 revised to 2.5. Investment in plant and machinery to be identified as a micro enterprise. The investment in plant and machinery, the limit was 1 crore. It has been revised to 2.5. For small, it was 10, revised to 25. Medium enterprise 50 crore, revised to 125. ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन आप सीआर में लिख रहे हैं. इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी के बेसिस पे. सो नाउ द न्यू रिवाइज क्राइटेरिया इज 2.5 फॉर द माइक्रो, 25 फॉर स्मॉल एंड 125 फॉर द मीडियम एंटरप्राइज. रिगार्डिंग द टर्नओवर, इट वाज 5. ओल्ड वन was 5, 50 and 250. 550 and 250 was the current. Revised to 10, 100 and 500. 10, 100 and 500. ठीक है, that is turnover. Turnover में last 250, last one 250. ठीक है ना. ये 1 पॉइंट आपको बेसिकली रिवीजन आ जाएगा. मतलब अगर आप डिस्क्रिप्टिव आंसर लिख रहे हैं तो जैसा रिवाइज कर देंगे, द इन्वेस्टमेंट लिमिट हैज बीन रिवाइज अपवर्ड, द टर्नओवर लिमिट हैज बीन रिवाइज अपवर्ड, दैट विल बी ओके. ऑब्जेक्टिव पर्पस के लिए वो इन्फॉर्मेशन रखें. सो दिस विल बिकम द फर्स्ट पार्ट. नेक्स्ट बिलो दैट, manufacturing mission with the mandate to focus on manufacturing mission with the mandate to focus on a ease and cost of doing business, ease and cost of doing business. B, future ready workforce for in demand jobs, future ready workforce for in demand jobs. Third, a vibrant and dynamic MSME sector. A vibrant and dynamic MSME sector. Next, availability of technology. Next, quality product. And next, clean technology manufacturing for climate friendly development.
ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट में बेसिकली आपने लिखा मैन्युफैक्चरिंग मिशन फॉर द मैंडेट टू फोकस ऑन. नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, सब पॉइंट नहीं, मेजर पॉइंट में. क्रेडिट कार्ड्स फॉर माइक्रो एंटरप्राइज. क्रेडिट कार्ड्स फॉर माइक्रो एंटरप्राइज. क्रेडिट कार्ड्स फॉर माइक्रो एंटरप्राइज. In which customized credit card with a rupees 5 lakh limit, customized credit card with a rupees 5 lakh limit for micro enterprise registered on Udyam portal. Udyam. In the first year 10 lakh such cards will be issued. In the first year 10 lakh such cards will be issued. 10 lakh such cards will be issued. ठीक है, अगेन रिपीट, जब ऑब्जेक्टिव लिख रहे होंगे तो ये इंफॉर्मेशन, अदरवाइज सब्जेक्टिव में उतना स्पेस नहीं होता आपके पास, लिखने वर्ड लिमिट है, तो यू हैव टू जस्ट टेक द पॉइंट हियर कि क्रेडिट कार्ड फॉर माइक्रो एंटरप्राइज. नेक्स्ट, scheme for first time entrepreneurs. Scheme for first time entrepreneurs. Scheme for first time entrepreneurs. Below that same point के अंदर, for 5 lakh first time entrepreneurs, for 5 lakh first time entrepreneurs, for 5 lakh first time entrepreneurs, including women, scheduled caste and scheduled tribe, after comma, a new scheme to be launched, to provide term loan up to 2 crore, term loan up to 2 crore during the next 5 year. So just remember, it is a policy announcement. The name of the scheme will come later on. बजट में जस्ट वो अनाउंसमेंट है. अभी अनाउंसमेंट is that the scheme for the first time entrepreneur will be launched, covering women, scheduled caste and scheduled tribe. Because overall what you have written above is basically development measures focusing on women, youth, and the overall guiding spirit will be with the inclusivity. So for that purpose, basically the scheme, the name of the scheme will come later on, further details will come later on, but you can just use that information. Next point, measures for labor intensive sectors. Measures for labor intensive sectors include, measures for labor intensive sector includes A, focus product scheme for footwear and leather sectors. Focus product scheme for footwear and leather products. This scheme is expected to facilitate
This scheme is expected to facilitate employment for 22 lakh person. Employment for 22 lakh person. After comma, generate turnover of 4 lakh crore. Employment for 22 lakh person, comma, generate turnover of 4 lakh crore and exports of over 1.1 lakh crore. So it will help in generating employment as well as promoting the exports. B. Measures for the toy sector. Measures for the toy sector. Measures for the toy sector to focus on development of clusters, skills, and a manufacturing ecosystem. Clusters, skills, and a manufacturing ecosystem that will create high quality, unique, innovative, and sustainable toys to represent Made in India brand. Made in India brand. The purpose is basically that nowadays a lot of Chinese toys are coming. So in order to just reduce that dependency on the import, the focus is to develop indigenously. So it is basically a cluster program. तो क्लस्टर प्रोग्राम ऑलरेडी जैसे एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल वाले आर्गुमेंट में, इफ यू सपोर्टेड बाय द थ्योरी, इफ देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स क्लस्टर्ड इन वन एरिया, ज्योग्राफिकली क्लस्टर्ड फर्म्स अगर हो जाएंगे, दे विल बी मोर एफिशिएंट एज कंपेयर टू फर्म्स स्कैटर्ड. तो क्लस्टरिंग विल हेल्प, स्किल विल हेल्प, and that will reduce the dependency on your import, and it also help in earning the export earnings. Third, support for food processing. ये मेरे जितने भी पॉइंट्स आप MSME के लिख रहे हैं वो सारे पॉइंट्स आप यूज कर सकते हो फॉर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. इफ द क्वेश्चन इज सजेस्ट सम मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, और what are the various measures taken by the government to improve the industrial performance. एग्रीकल्चर परफॉर्मेंस के लिए उससे पहले वाले टॉपिक में आ गया. इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस के लिए बेसिकली यू कैन टेक अप दी MSME अनाउंसमेंट. सपोर्ट फॉर फूड प्रोसेसिंग थ्रू establishment of National Institute of Food Technology in Bihar. National Institute of Food Technology in Bihar. So this will help to improve income. This will help to improve income for farmers. This will help to improve income for farmers and promote skill and entrepreneurship.
skill and entrepreneurship. And the first point you have already written the classification of or revised classification of the MSME sector. Yes, second part is basically for this. Then for the agriculture and the MSME. Third area is investment. ठीक है, अपने नोटबुक में उसको सेपरेट करके लिखोगे तो इट विल बी बेटर. एग्रीकल्चर यू हैव टेकन दैट. नाउ फॉर इंडस्ट्रियल पार्ट एंड द थर्ड पार्ट इज इन्वेस्टमेंट. बेसिकली इट इज इन्वेस्टमेंट इन पीपल, इकोनॉमी एंड इनोवेशन. It is not termed as a just mere industrial investment. It is investment in people. Investment in people, economy, and innovation. ठीक है, मेन मेजर्स और अनाउंसमेंट्स. फर्स्ट, सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0. सक्षम पोषण 2.0. Second, expansion of capacity in IITs. Expansion of capacity in IITs. So more intake. Expansion of capacity in IITs. Third, daycare cancer centers in all district hospitals. Daycare cancer centers in all district hospitals. Daycare cancer centers in all district hospitals. Fourth, भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम. भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम. भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम to provide digital form Indian language book. Digital form Indian language books. भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम to provide digital form Indian language books for school and higher education. For school and higher education. For school and higher education. Next, National Centers of Excellence. National Centers of Excellence for Skilling. National Centers of Excellence for Skilling to be set up with a global expertise and partnership. National Centers of Excellence for Skilling to be set up with global expertise and partnership. Next,
tinkering labs. Adult tinkering labs to be set up in government schools, in next 5 years. Next is Center of Excellence in Artificial Intelligence. Center of Excellence in Artificial Intelligence. Center of Excellence in Artificial Intelligence for Education. Artificial Intelligence for Education, with a total outlay of 500 crore. With a total outlay of 500 crore. Next, expansion of medical education. Expansion of medical education. Expansion of medical education by increasing medical seats. By increasing medical seats by 75,000 in next 5 years. 75,000 in next 5 years. Next, welfare of online platform workers. Welfare of online platform workers. Online platform workers with registration on e-shram portal and healthcare under PM Jan Arogya Yojana, and healthcare under PM Jan Arogya Yojana. PM Jan Arogya Yojana. Next is PM Swanidhi. PM Swanidhi to be revamped. PM Swanidhi to be revamped. PM Swanidhi to be revamped with enhanced loan from banks. With enhanced loan from banks. ये मेनली इंफॉर्मेशन we have written basically 3 part of it. Investment in people, then investment in the economy, and then investment in the innovation. तो जो पॉइंट अभी आपने मार्क कर रखा है बेसिकली दीज आर इन्वेस्टमेंट इन पीपल. जो इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट होगा दे आर इन्वेस्टमेंट फॉर द इकोनॉमी एज सच. तो नाउ यू आर टेकिंग द सेकंड पार्ट. मतलब इसको भी आप फर्दर कैटेगराइज कर सकते हो. कैटेगराइजेशन में यहाँ तक का पॉइंट हो जाएगा इन्वेस्टमेंट इन द पीपल. तो ह्यूमन डेवलपमेंट वाला कोई क्वेश्चन अगर आता है यू कैन यूज दिस पार्ट फॉर द ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, देन यू कैन टेक द इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी पार्ट. नेक्स्ट, investment in economy
includes investment in economy includes A. Support to states for infrastructure. Support to states for infrastructure. Support to states for infrastructure with an outlay of 1.5 lakh crore, outlay of 1.5 lakh crore, after comma 50-year interest-free loan, 50-year interest-free loan, 50-year interest-free loan to states, 50-year interest-free loans to states for capital expenditure, and incentives for reform, for capital expenditure and incentives for reform, So remember, what you are studying is basically the union budget. So it is central government budget. So central government is allocating what will be the estimated receipts and estimated expenditure. So central government is basically planning to give assistance to the states for investment in the economy. So loan will be given interest free for 50 years for making expenditure on capital. So what is capital expenditure and how it is different from your revenue expenditure? Capital expenditure का मतलब it will create some asset, or revenue expenditure not creating any asset, neither reducing the, so it is not creating some asset, but capital expenditure will basically create asset. So it is basically given for the asset creation. Second, Jal Jeevan Mission, Jal Jeevan Mission, to achieve 100% coverage, to achieve 100% coverage, the mission has been extended till 2028 with an enhanced total outlay, Third, C. Power sector reform, which include incentivize distribution reform, and augmentation of intrastate transmission, Next, asset monetization plan, asset monetization plan, asset monetization plan 2025-30, asset monetization plan 2025-30 launched to invest capital of 10 lakh crore in new project
in new project. Next, urban challenge fund. Urban challenge fund. Urban challenge fund of 1 lakh crore. Urban challenge fund of 1 lakh crore to implement the proposal for cities as growth hubs. Cities as growth hub. Underline that. Cities as growth hub. Cities as growth hub. After comma, creative redevelopment of cities. Creative redevelopment of cities. Creative redevelopment of cities. And water and sanitation. Water and sanitation. Water and sanitation. So that is announcement for the urban challenge fund. Next is a maritime development fund. Maritime development fund. Maritime development fund with a corpus of 25,000 crore. मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड. जो की टर्म होंगे बस उसको अंडरलाइन कीजिएगा. फर्दर डिटेल हाउ मच अमाउंट एटसेट्रा यू कैन इग्नोर इट. ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना, अदरवाइज जस्ट टेक द पॉइंट्स. मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड विथ अ कॉर्पस ऑफ 25,000 करोड़ फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग. फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग. फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग with up to 49% contribution. With up to 49% contribution by government. Up to 49% contribution by government. Next is nuclear energy mission for Viksit Bharat. Nuclear energy mission. Nuclear energy mission for Viksit Bharat. And one more already program is there, but under UDAN, that is for the connectivity part. Regional connectivity to 120 new destination. Regional connectivity to 120 new destination. 120 new destination. So new airports we can say. 120 new destination and carry 4 crore passengers. And carry 4 crore passengers in the next 10 years. In the next 10 years. In the next 10 years. ठीक है. So this was basically you have written for the investment in the economy part. ठीक है. कैटेगराइज करोगे आप प्रॉपरली, बिकॉज जब आप उसे आंसर कर रहे हैं तो इट कैन नॉट बी रिटन इन टोटलिटी. सो फॉर द इन्वेस्टमेंट इन द पीपल यू हैव रिटन फर्स्ट, देन इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी. नाउ यू आर राइटिंग द टेकिंग द थर्ड वन, which is investment in the innovation, to promote the innovation. Next paragraph. Investment in next point of मतलब overall investment topic is there. That means what you have written here is the 4 points. Agriculture is clear, MSME is clear. Investment के अंदर you have made 3 part. Investment in people,
इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमी, इन्वेस्टमेंट इन इनोवेशन. ठीक है. सो विद इन दैट यू आर राइटिंग द थर्ड वन नाउ, इन्वेस्टमेंट इन प्रमोटिंग इनोवेशन. Investment in promoting innovation includes number one, PM research fellowship. PM research fellowship. PM research fellowship to provide 10,000 fellowship, to provide 10,000 fellowship for technological research, for technological research in IITs. Second, allocating 20,000 crore, allocating 20,000 crore to implement, allocating 20,000 crore to implement private sector driven, allocating 20,000 crore to implement private sector driven research, development and innovation initiative, research, development and innovation initiative. Third is gene bank for crops, gene bank for crops, germplasm, gene bank for crops, germplasm, GERMPLAS, germplasm. Within that, the second gene bank with 10 lakh germplasm, the second gene bank with 10 lakh germplasm lines to be set up, 10 lakh germplasm lines to be set up for future food and nutritional security, for future food and nutritional security, future food and nutritional security. Next, national geospatial mission, national geospatial mission to develop foundational geospatial infrastructure, to develop foundational geospatial infrastructure and data, to develop foundational geospatial infrastructure and data. Using PM Gati Shakti facilitation, using PM Gati Shakti,
using PM Gati Shakti, facilitation and modernization of land records, facilitation and modernization of land records, comma, urban planning and design of infrastructure project. One more, Gyan Bharatam mission. So this was the third part. ठीक है, वो डिजिटलाइजेशन है बेसिकली, जितने भी मैन्युस्क्रिप्ट है उनको डिजिटलाइजेशन है, दैट इज बेसिकली ज्ञान भारतम मिशन. सो इन्वेस्टमेंट इन द पीपल, इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी एंड इन्वेस्टमेंट इन द innovation part. So this was the third component of the journey of development. For agriculture, for MSME, then investment and few information regarding the exports. Fourth part is for the exports, promoting exports. But very few announcements here. Promoting exports. Number one, export promotion mission with sectoral and ministerial targets. Export promotion mission with sectoral and ministerial targets. मतलब अलग अलग मिनिस्ट्रीज के लिए भी टारगेट होगा, सेक्टर वाइज भी टारगेट होगा. With sectoral and ministerial target to facilitate easy access to export credit, and support to MSME to tackle non-tariff measures in overseas market, or abroad market. Because nowadays more and more non-tariff barriers are being used by the developed countries in order to reduce their imports. So it is adversely impacting the exports of the developing countries. So in order to deal with those non-tariff barriers and how you can overcome that non-tariff barriers, you have to help the MSME sector. Second, Bharat Trade Net. Is a digital public infrastructure for international trade will be set up as a unified platform for trade documentation and financing solutions. It will provide support for
it will provide support for integration with global supply chain. It will provide support for integration with global supply chain. Global supply chain. Third is a national framework for global capability centers. National framework for global capability centers. Global capability centers. Fourth, warehousing facility for air cargo. Warehousing facility for air cargo. मतलब जो भी पेरिशेबल प्रोडक्ट है उसके भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए यू हैव टू इम्प्रूव देयर इंफ्रास्ट्रक्चर. सो द जर्नी फॉर द डेवलपमेंट एंड द 4 engines of development regarding what are the measures taken by the government or announced in the union budget relating to agriculture MSME. लार्जर क्वेश्चन कैन बी क्रिएटेड अगर क्वेश्चन कभी बजट के ऊपर स्पेसिफिकली होता है. लाइक व्हेन यू राइट द डेवलपमेंट मेजर्स फोकसिंग ऑन गरीब यूथ अन्नदाता एंड नारी. These are development measures. All are the development measures announced in the different areas. But when you are answering it, you have to categorize into 4 parts. For agriculture, announcement is there. For MSME is there. For investment in the people is there. Investment in the economy is there. Investment in the innovation is there. And then promoting the export. So these are the 4 engines of the development. Now come to the second part, in which you have written that these measures, the fuel to that engine will be provided by the reform. So reforms in the area of financial sector, reforms in the area of fiscal sector, and reforms in the area of regulation. So regulatory reform, financial sector reform, and the fiscal sector reform. कैसे भी पहले reforms as the fuel. So one area is financial. So we have financial sector reform measures. Then take second as the fiscal. Fiscal mean reform is here the tax one. Tax reform. And you can divide it further into 2 parts. That is direct and indirect. Few announcements related to the indirect as well. Direct and indirect. Direct tax or indirect tax. And it simply announces that a new income tax law will be introduced. Still the income tax law is basically the old one. So that tax code के फॉर्म में proposal है, किसी और नाम से आ सकता है. But it has just another announcement that it will be followed by a new income tax bill. And the major changes are basically in the tax slab. वो factual कोई guideline overall reform के लिए नहीं है. But some announcement, and then the third area is the regulatory reform. Okay, now explain for the first one, financial sector.
within that. Financial sector reform and development measures. Financial sector reform and development measures announced in Union Budget 2025-26. Announced in Union Budget 2025-26. Announced in Budget 25-26 includes. So now we are writing basically for this financial. First one, Grameen credit score. Grameen credit score. Grameen credit score. Underline that. Grameen credit score framework to serve the credit needs. To serve the credit needs of self-help group members and people in rural areas Next, revamped central KYC registry. Revamped central KYC registry to be rolled out in 2025. Revamped central KYC registry to be rolled out in 2025. Third, rationalization of requirements and procedures for speedy approval of company mergers. Next is FDI limit for insurance sector. This is a key announcement here. FDI limit for insurance sector will be raised from 74 to 100%. 74 to 100%. So far the insurance sector was not open 100% for equity to be held by the foreign investors. Now it is open for the 100% equity as well. Next, make the heading for the fiscal reform. Fiscal reform or / tax reform. We will write combining for direct and the indirect. Fiscal reform within bracket tax reform. Changes in direct tax and proposal to introduce new income tax bill. Has been announced.
Next, personal income tax reform. Personal income tax reform. Personal income tax reform with a special focus on middle class, a special focus on middle class to increase their spending capacity, to increase their spending capacity, to increase their spending capacity has been announced by changing the tax slab, by changing the tax slab, changing the tax slab. So complete information not needed, but it's just 0 to 4 lakh there will be no taxation. उसके बाद every 4 lakh आप ऐड करते जाओ 5%, 10%, 15, 20, 25 and then in excess of 24 lakh it is 30%. ठीक है, तो 0 to 4 तक nil, 4 to 8 5, then 8 to 12, 12 to 16, 16 to 20, 20 to 24. ठीक है, and then 24 onwards it will be 30%. ठीक है, याद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं, ये 4 का स्लैब है. Below that आंसर में बस आप चेंज इन टैक्स स्लैब वहां लिख देंगे, दैट विल बी इनफ. बट रैशनलाइजेशन है, बेसिकली सिंप्लीफिकेशन है एंड इंक्रीजिंग द रिड्यूसिंग द टैक्स बर्डन इज देयर. बट फॉर ऑब्जेक्टिव, फॉर एमसीक्यू यू कैन यूज इट. बिलो दैट rationalization of TDS, rationalization of TDS, that is tax deducted at source. Rationalization of TDS for easing difficulties. Rationalization of TDS for easing difficulties. Next, encouraging voluntary compliance. Encouraging voluntary compliance by extension of time limit. Encouraging voluntary compliance by extension of time limit to file updated return. To file updated return. To file, that is income tax file. To file in updated return from the current limit of 2 year, from the current limit of 2 year to 4 years. Current limit of 2 year to 4 year. Next, reducing compliance burden. Reducing compliance burden. Reducing compliance burden for small charitable trust. Reducing compliance burden for small charitable trust by increasing their period of registration. By increasing their period of registration. By increasing their period of registration from 5 years to 10 years.
5 year to 10 year. Next, rationalization of custom tariff structure. Rationalization of custom tariff structure. Rationalization of custom tariff structure. Custom tariff structure for industrial goods. Custom tariff structure for industrial goods. Through removal of 7 tariff rates. Removal of 7 tariff rates. After comma, apply not more than one cess or surcharge. Apply not more than one. Apply not more than one cess or surcharge. What is cess? It is tax on tax. So you can have education cess, you can have some other cess. So it is apply not more than one cess. So it is not, you can have multiple amount of cess on the, so it is basically a rationalization of the indirect taxation. After comma, apply equivalent cess. Apply equivalent cess to maintain. Apply equivalent cess to maintain effective duty incidence. Effective duty incidence. Apply equivalent cess to maintain effective duty incidence on most items. On most items. And lower cess on certain items. Lower cess on certain items. So we have taken this fiscal, a few further regulatory reform first. Regarding regulatory reforms, based on principles and trust, to improve productivity and employment. Based on principles and trust to improve productivity and employment. A high level committee for regulatory reform will be set up. Second, Jan Vishwas Bill 2.0. Jan Vishwas Bill 2.0 to decriminalize more than 100 provisions. In various laws
more than 100 provisions in various laws. And third, investment friendliness index. Investment friendliness index of states. Investment friendliness index of states. Will be prepared ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ से आपको जो पॉइंट्स आप लिख रहे हैं उसके अंदर से भी क्लियर हो रहा है कि ये कोई मेजर रिफॉर्म मेजर्स नहीं है। जैसे अनाउंसमेंट है दैट रेगुलेटरी रिफॉर्म कमेटी विल बी सेटअप, सो इट इज नॉट अ मेजर पॉलिसी अनाउंसमेंट हियर। बजट के अंदर कोई मेजर पॉलिसी रिफॉर्म अनाउंसमेंट नहीं है। अनाउंसमेंट दैट अ कमेटी विल लुक आफ्टर दिस, बट देयर इज नॉट अ अनाउंसमेंट एज सच। सो तो ऑब्वियसली ये ऑब्जेक्टिव के लिए ज़्यादा रेलिवेंट हो जाता है। बट अगर आप कोई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन लिख रहे हैं तो डिस्क्रिप्टिव कोई लिए आपने जो स्टार्ट में पॉइंट्स मार्क कर रखा है एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट एंड दी एक्सपोर्ट्स, दैट विल बी इम्पॉर्टेंट। नाउ जस्ट वन इंफॉर्मेशन मोर इज since it is a union budget, so from where does the money is coming and where it is going according to the priority you have to write it. ठीक है, वो पाई चार्ट आपको हर जगह मिल जाएगा, बट आप एज पर द प्रायोरिटी लिखोगे रुपी कम्स फ्रॉम विच सोर्स एंड वेयर इट गोज। तो फर्स्ट इज रुपी कम्स फ्रॉम, comes from, that means it is coming to the central government. From which sources central government is getting the fund, from which, so obviously अगर आप concept wise को divide करेंगे तो from where central government is getting the fund, from where does the rupee is coming to the central government? It is tax receipts as well as the non tax receipts. टैक्स रिसिप्ट्स आ जाएंगे और नॉन टैक्स रिसिप्ट्स आ जाएगा। टैक्स रिसिप्ट्स के अंदर आप फर्दर डिवाइड कर दोगे उसको डायरेक्ट टैक्स में और इनडायरेक्ट टैक्स में। डायरेक्ट टैक्स के फर्दर डिवीजन हो जाएंगे पर्सनल इनकम टैक्स में, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स के अंदर। इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आपका जीएसटी आ जाएगा, फिर एक्साइज ड्यूटी आ जाएगा, कस्टम ड्यूटी सेपरेट आ जाएगा। तो यू आर राइटिंग अकॉर्डिंग टू द इम्पोर्टेंस। सो मनी इज बेसिकली कमिंग फ्रॉम शेयर के अकॉर्डिंगली लिख लीजिए, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। बोरविंग एंड अदर लायबिलिटीज, borrowing and other liabilities, %24%. So almost 1/4 is your borrowing debt. Second is income tax. %22 income tax. Third is GST and other taxes, mainly GST, 18%. Corporate tax or corporate income tax, %17%. Non-tax receipts, non-tax receipts, non-tax receipts, 9% mainly, but will be the non-tax receipts. गवर्नमेंट के नॉन टैक्स रिसिप्ट्स क्या होंगे? रिसिप्ट्स ऑफ गवर्नमेंट नॉन टैक्स रिसिप्ट्स। एक दो बार वो 5 मार्कर में क्या कि इकोनॉमिक सर्विस में पूछा गया मेन कंपोनेंट क्या क्या होता है।
गवर्नमेंट के जितने भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं उनको अगर प्रॉफिट हो रहा है तो दैट प्रॉफिट इज द नॉन टैक्स रिसिप्ट्स. गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, स्कूल से जहाँ फीस आप डिपॉजिट करें, दे आर नॉट द टैक्सेस, दोज आर द बेसिकली द जो भी गवर्नमेंट के सर्विस के लिए जहाँ हम फीस पे कर रहे हैं, इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ टैक्स. टैक्स तो यूनिलैटरल ट्रांसफर हो गया, बट फॉर गेटिंग एनी पर्टिकुलर सर्विस यू आर पेइंग द पेमेंट, so that will basically become the part of the government non-tax receipts. Sixth, union excise duty. Union excise duty 5%. Custom duty 4%. Custom duty 4%. And non-debt capital receipts. Non-debt capital receipts. Non-debt capital receipts. What is non-debt capital receipt? Any example? Non-debt capital receipts. Disinvestment proceeds. They are basically the non-debt capital receipts. You can invest it only one. Capital receipts का मतलब हो गया आपकी वो नॉन रिकरिंग होगा, ठीक है. You can sell that asset only once, so it is not creating any debt also because government is selling its own equity. So it is basically consisting of the disinvestment proceeds. Non-debt capital receipts 1. So this is basically the share of from where money is coming, and the other information is where does it go. So rupee goes to जो मेजर कंपोनेंट है उसको याद रखेंगे. लार्जेस्ट कंपोनेंट इज द बोरोइंग. और टैक्स में एक दो क्वेश्चन बनते हैं हमेशा कि वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए होता है कि which tax is contributing more, which tax is contributing less. So income tax 22, GST 18, corporate. तो अगर आपसे क्या डायरेक्ट टैक्स का शेयर, डायरेक्ट टैक्स का शेयर, तो डायरेक्ट टैक्स इज बेसिकली द कॉर्पोरेट एज वेल एज इनकम टैक्स. तो 17 एंड 22, ठीक है. वो डायरेक्ट टैक्स का हो जाएगा. और इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी भी आ जाना है, ए प्लस यूनियन एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ऑल अदर आर द इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है. सेकेंड रुपी गोज टू first, state's share of taxes and duties. State's share of taxes and duties. State's share of taxes and duties 22%. 22%. Interest payment, because obviously जो largest source था that was the borrowing, so obviously here also interest payment. Interest payment is 20%. Third is a central sector scheme. Central sector scheme. But the central sector scheme is excluding the capital outlay on defense and subsidy. Central schemes are there, the investment on the central schemes 16%. Central scheme excluding capital outlay on defense and subsidy. Capital outlay on defense and subsidy, excluding that 16%.
Next is finance commission and other transfers. Finance commission and other transfer. फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर. ठीक है, एक तो आपका जीएसटी का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा. ठीक है, बिकॉज उसके अंदर सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी दोनों है, तो दैट पार्ट विल गो. बाकी जो सेंट्रल पूल होता है वो सेंट्रल पूल में किससे डिवीजन होगा, दैट विल बी रिकमेंडेड बाय द फाइनेंस कमीशन. तो फाइनेंस कमीशन के बेसिस पे जो फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन होगा, बेस्ड अपॉन दैट फर्दर ट्रांसफर विल बी देयर. मतलब मनी इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट इन डिफरेंट वेज. एक जो अर्स्टवाइल वी कैन से प्लानिंग कमीशन के थ्रू होता था, वो आप आज के डेट में आप कह सकते हो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम हो जाते हैं जो स्टेट्स में जाते हैं. मनी विल फ्लो फ्रॉम दैट. एक टैक्स का शेयर आ जाएगा और एक जो फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करेगी उसके बेसिस पे. तो फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर इज 8%. सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है, दूसरा होता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम. स्कीम्स आर बेसिकली इंप्लीमेंटेड बाय द स्टेट्स बट स्पॉन्सर्ड बाय द सेंटर. One is the central scheme only, that will be a central scheme here, and other you are adding the centrally sponsored scheme, again 8%. Centrally sponsored scheme. Then other expenditures not specified here, other expenditure also 8, and pension 4%. Pension 4% last में, pension 4%. पेंशन से पहले अदर एक्सपेंडिचर also 8%. अदर एक्सपेंस में यहाँ पे डिवीजन के फॉर्मेट में नहीं है, तो यस मेजर सब्सिडीज आर सेपरेट. सब्सिडीज आप अदर पेंशन लिखा है ना 4%, उससे पहले आप लिख लो डिफेंस और मेजर सब्सिडीज. सेंट्रल स्कीम में हमने क्या क्या एक्सक्लूड कर दिया था, डिफेंस और सब्सिडी को. तो डिफेंस 8% एंड मेजर सब्सिडी 6%. डिफेंस 8% एंड मेजर सब्सिडी 6%. रिमेंबर ये सारे जो भी परसेंटेज लिख रहे हैं, ये परसेंटेज आउट ऑफ दैट 1 रुपी है, दो दैट मनी कमिंग. बट व्हेन यू आर एक्सप्लेनिंग समवेयर, अगर आप दूसरी जगह लिख रहे हैं कि हाउ मच इज द परसेंटेज ऑफ जीडीपी, सो इन टर्म्स ऑफ जीडीपी इट इज हाउ मच परसेंटेज, दैट इज अ डिफरेंट इन्फॉर्मेशन. This is not information about the percentage in terms of the GDP. Clear? So this is basically how the money is coming and how money is basically flowing out. And some major macro variables. So in the budget, the information of one is the fiscal deficit, revenue deficit, primary deficit, so rating for 2025-26 ये बजट एस्टिमेट होता है. 2025-26 budget estimate. Estimated to be 4.4 fiscal deficit. 4.4% of GDP. A revenue deficit 1.5. Primary deficit 0.8. And how to find that primary deficit? Fiscal deficit minus the interest payment. And what is fiscal deficit? ठीक है, जैसे इंफॉर्मेशन देखना. whenever you basically prepare the budget, in the budget there will be broadly technically we can say there are two parts. One is your revenue account, another is
capital account. So there will be revenue receipts and revenue expenditure, capital receipts and capital expenditure. So revenue will have revenue receipts like जितने भी टैक्सेस हैं सारे रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं, कोई रीपेमेंट ऑब्लिगेशन नहीं होगा यहाँ पे. एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, व्हाट आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? वो एक्सपेंडिचर जिससे कोई एसेट क्रिएट नहीं हो रहा, लाइक सैलरीज हैं, दे आर बेसिकली रेवेन्यू रेकरिंग इन नेचर होंगे. ठीक है, दे आर बेसिकली रेकरिंग इन नेचर विल बी रेवेन्यू. नॉन रेकरिंग विल बी दी कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसिप्ट्स. So in the capital receipts you include basically the disinvestment and the borrowing also. ठीक है, वहाँ borrowing भी include है. And capital expenditure will include capex, capital expenditure, basically for creation of the assets. So you create some asset because of that. So when we talk about the budget deficit, obviously आज के डेट में budget deficit term use नहीं करते. अब budget deficit अगर simply बोले तो उसका मतलब टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसिप्ट्स का गैप हो जाएगा. मतलब टोटल रिसिप्ट्स यू विल टेक रेवेन्यू एंड कैपिटल बोथ एंड माइनस टोटल एक्सपेंडिचर. बट रिमेंबर इन दैट टोटल रिसिप्ट्स व्हेन यू टेक रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड व्हेन यू टेक द कैपिटल रिसिप्ट्स इंक्लूड बॉर्विंग ऑल्सो. तो जो बॉर्विंग है वहां तो रीपेमेंट ऑब्लिगेशन है, तो टेक्निकली रीपेमेंट ऑब्लिगेशन को मुझे कंसिडर नहीं करना था. तो व्हेन वी टेक द फिस्कल डेफिसिट व्हाट वी डू, we exclude the borrowing part. So we take the total expenditure minus total receipts excluding the borrowing. So that will be of fiscal deficit. From that fiscal deficit you subtract the interest payment to get primary deficit. But why we subtract interest? What is the logic of, what is the purpose of getting or information about the primary deficit? इंटरेस्ट पेमेंट इज बेसिकली पार्ट ऑफ द प्रीवियस बॉर्विंग. तो वो करंट फाइनेंशियल को शो नहीं कर रहा. लास्ट के फाइनेंशियल में अगर डिफिकल्टी थी, लास्ट ईयर हमने बॉर्विंग की थी, ऑन दैट बॉर्विंग यू हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन द सब्सिक्वेंट ईयर. तो बट इफ यू आर इंटरेस्टेड इन नोइंग व्हाट इज द करंट सिचुएशन, सो फॉर दैट पर्पस वी मस्ट लुक फॉर द प्राइमरी डेफिसिट इग्नोरिंग द इंटरेस्ट लायबिलिटीज. तो इफ यू हैव इंफॉर्मेशन अबाउट दैट कि फिस्कल डेफिसिट माइनस interest payment is basically the primary deficit. So how much is the interest payment as a percentage of GDP? How much is the interest payment as a percentage of GDP? ये दो information है आपके पास. Fiscal deficit is 4.4 and primary is, so difference of these two, that must be the interest payment in terms of GDP. That must percentage must be the interest payment in terms of GDP. ठीक है, तो अगर वो इन्फॉर्मेशन मालूम है यू कैन एस्टिमेट व्हाट विल बी द इंटरेस्ट पेमेंट. वहां जो इंटरेस्ट पेमेंट हमने लिख रखा है ये किसके लिए? इट इज नॉट फॉर द जीडीपी. दैट रुपी दैट इज कमिंग टू द गवर्नमेंट इज नॉट योर जीडीपी. इट इज बेसिकली सिंपली एक्सप्लेनिंग फ्रॉम वेयर गवर्नमेंट इज गेटिंग मनी एंड फ्रॉम वेयर इट इज एलोकेटिंग दैट मनी. एंड व्हाट इज द इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट? इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट से क्या माइनस कर लेते हैं? ग्रांट्स गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट्स फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर. सो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, ऐड वन मोर, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट. इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट इज 0.3%. Grants given by central government to the states. तो ये अपडेटेड इंफॉर्मेशन बेसिकली आप यहाँ तक इसको एक्सप्लेन करते हैं. जो बजट के अंदर जो इतने भी प्रोविजंस मेजरली जो एक्सप्लेन किया जा रहा है, इन शॉर्ट you have taken basically the 4 areas याद रखेंगे. 4 areas, that means agriculture, MSME, investment and the exports. They are categorized as the engines of the development, and reforms will act as the fuel, the spiriting
part will be the inclusivity, and the aim is to have Viksit Bharat. And then you have written basically the reform area in the agriculture, MSME, investment के अंदर 3 लिखे हैं आपने, investment in the people, investment in the infrastructure, investment in the innovation, ठीक है. एंड देन फॉर द रिफॉर्म. तो बजट रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, इसको आप अपडेट कर लेंगे अपने नोट्स के अंदर, जो ऑलरेडी कर रखा है उसके अंदर इसका अपडेटिंग के लिए. मोर डिटेल ऑब्वियसली विल बी गेटिंग इन द इकोनॉमिक सर्वे, बिकॉज इकोनॉमिक सर्वे के अंदर जब व्हेन यू टेक द पब्लिक फाइनेंस चैप्टर, इन दैट पब्लिक फाइनेंस चैप्टर देयर विल बी मोर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द गवर्नमेंट फाइनेंसिंग, ठीक है. और वहाँ से आपको कुछ स्टेटमेंट पैराग्राफ वगैरह भी यूज़ करने हैं जो आंसर में इनकॉर्पोरेट करेंगे एज अ इंट्रोडक्शन पार्ट और एज अ कंक्लूजन पार्ट, ठीक है. सो मेनली इन दिस लेक्चर वी हैव कवर्ड यूनियन बजट. सो नेक्स्ट विल टेक अप इकोनॉमिक सर्वे. सर्वे के अंदर याद रखिए डिटेल में अगर आप मेजर चैप्टर्स को भी कवर करें, सम स्मॉलर चैप्टर्स यू कैन इग्नोर और उसका हाईलाइट से भी कवर हो जाएगा, लाइक क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट है, सोशल सेक्टर है. मेजर चैप्टर्स विल बी द फर्स्ट वन विच गिव्स बेसिकली द सिनॉप्सिस ऑफ द एंटायर सर्वे. अगर आप पूरा सर्वे नहीं पढ़ रहे हैं, अगर फर्स्ट चैप्टर पढ़े विल गिव यू द ओवरऑल व्यू. सो फर्स्ट चैप्टर इज दैट, सेकंड इज बेसिकली द मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट, थर्ड एक्सटर्नल सेक्टर ऑलरेडी वो इंपॉर्टेंस के फॉर्मेट में गिवन है द अरेंजमेंट, बट बल्कि इंफॉर्मेशन होता है, इसको आपको शॉर्ट में करना है, ठीक है. यू हैव टू हाउ टू यूज इट, आई विल एक्सप्लेन हाउ टू अप्लाई दिस और यूज इट, ठीक है. तो टुमारो विल टेक इकोनॉमिक सर्वे. हाँ आप सारा पढ़िए. हाँ यूपीएससी ने स्पाई कैमरा लगा रखा है आप. ठीक है. तो फर्स्ट चैप्टर विल टेक फॉर इकोनॉमिक सर्वे टुमारो, चैप्टर नंबर 1 से, ठीक है. कल से करते हैं.